Hello everyone, welcome to the 13th session of our vocabulary series lectures. In this session we are going to learn some new words related to some studies, but these are going to be a little bit difficult, but if you understand the etymology it will be very easy. Okay, the first is we are going to talk about some segmented creatures, matlab we are going to talk about insects. Now, all the insects in the world, such as flies, bees, beetles, wasps, all the insects of the world are divided into three parts: head, thorax, and abdomen. Okay, all the insects, you can notice that there will be a line which separates their head from the thorax, and there will be a line which separates their thorax from the abdomen. So there is a clear cutting which can be clearly seen in case of insects. That's why the science of zoology which deals with insects is called entomology. क्योंकि उनकी बॉडी को आप देखोगे तो आप उनकी बॉडी में you will observe that there is a cutting in which has already been taken place. Cutting in of three parts: head, thorax, and abdomen. The study of insects, science of zoology which deals with insects is called entomology. Cutting in, entomology. Okay. Similarly, ek means out. तो एक्टोमोलॉजी इज समथिंग विच इज कटिंग आउट ऑफ समथिंग, कुछ तो भी काट के बाहर निकाल रहे हैं. तो देखो, यूज्ड इन वर्ड्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स वेयर पार्ट्स आर कट आउट. जैसे कि टॉन्सिलेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ योर टॉन्सिल्स, अपेंडेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ योर अपेंडिक्स, मैस्टेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, हिस्टेरेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ द यूटेरस, prostatectomy is removal of your prostate. So these are all procedures which show you that something is being cut out of the body. Okay, now another word we can look at is ek. Ek we know is out. Center, so eccentric, ऐसा आदमी जो सेंटर से बाहर है की तरफ रहता है, इसको हम एक्सेंट्रिक बोलते हो. तो what does it mean? It means deviating from the normal in behavior attitude. तो कोई इंसान अगर नॉर्मल जो एक्सेप्टेबल है इसके अलावा कुछ विपरीत करता है, उसके बाहर जाके कुछ करता है, तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं ही इज एन इसेंट्रिक पर्सनैलिटी. ओके, आउट ऑफ द सेंटर. फिर अनदर वर्ड इज एनाटॉमी. टॉम मीन्स कटिंग एंड एना मीन्स अप, कटिंग अप. तो कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू फाइंड आउट इट्स बॉडीली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एनाटॉमी. अगर आपको इंसान की एनाटॉमी जाननी है तो आपको उसे काटना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा कि इसके भीतर क्या क्या है. तो दैट इज कटिंग अप ऑफ समथिंग. तो एनाटॉमी इज कटिंग अप ऑफ एन प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स बॉडीली स्ट्रक्चर. अनदर वर्ड दैट यू कैन लर्न इज टोम. टोम इज कट, वी ऑलरेडी नो, बट इसका मतलब ये नहीं है. टोम का मतलब है एनी बुक विच इज पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क ऑफ मैनी वॉल्यूम्स. तो बहुत सारे वॉल्यूम में से एक कट करके हमने निकाला, उसको हम टोम बोलते हैं. लेकिन इसका करंट यूसेज ये है कि एन एक्सेप्शनली लार्ज बुक और वन दैट इज हैवी एंड डल. ठीक है, दोनों मतलब हो सकते हैं. अ बिग वॉल्यूम, अ बिग बुक, और समथिंग विच इज एक्सेप्शनली डल, अ वेरी हैवी बुक. डाइकोटोमी, टोमी मीन्स कट एंड डाइको मीन्स टू. तो दो हिस्सों में काटना इज कॉल्ड डाइकोटोमी. सो डाइकोटोमी इज अ स्प्लिटिंग इन टू ऑफ समथिंग. सो डाइकोटोमी ऑफ फेम, डाइकोटोमी ऑफ एनी कंडीशन. जो अगर डाइकोटोमी आए मतलब दो चीजों में विभाजन हो रहा है, कट हो रहा है. अनदर वर्ड एपिटोम. सो एपी मीन्स ऑन, अपॉन और थ्रू, एंड कटिंग. सो कटिंग थ्रू समथिंग. तो देखो मीनिंग क्या है एपिटोम का? कट थ्रू द एसेंस ऑफ समथिंग, द वेरी हार्ट ऑफ द आइडिया कंटेन्ड इन इट. समरी, कंडेंसेशन ऑफ समथिंग. तो जब हम किसी चीज को कंडेंस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एपिटमी, एपिटोम. शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, शी इज द समरी, शी इज द कंडेंसेशन ऑफ समथिंग. काइंडनेस की पूरी प्रतिमा है वो, शी इज द एपिटमी ऑफ इट. Another word that we have learned in the previous lecture is logos. Logos means science or study. But another meaning of logos is word or speech. That is also another meaning of that word. Another word we have learned is philion, phile, which means to love. Philosophy, love of wisdom. So let's see some words. Philology, love of words.
ओके, लव ऑफ वर्ड्स इज फिलोलॉजी. तो भाषा का जिसको बहुत प्रेम होगा, लिंग्विस्टिक्स का जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसे हम कहेंगे फिलोलॉजी, फिलोलॉजिस्ट. ओके. Lingua means tongue. This is a very important root word. Linguistic comes from the root word lingua. Lingua means tongue. कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कौन सी टंग में बात कर रहे हैं. Philanthropy, love plus anthropos, which means mankind. तो love of mankind is called philanthropy. Love of mankind. Another word, philanderer, andry मतलब male, और phil means love. तो लव, फूल अराउंड, बी सेक्शुअली प्रोमिस्क्यूअस, मतलब यू कैन गो आउट विथ एनीबडी, यू कैन हैंग आउट विथ एनीबडी, you have no loyalties to anybody when it comes to your intercourse or your sexual life. Having extramarital relations, तो ऐसे आदमी को हम बोलेंगे philanderer, one who fools around even despite being married or despite being in a relationship. Philosophy, मैंने पहले ही बोल दिया, love of sophism, love of wisdom. फिलाडेल्फिया, ये एक सिटी का नाम है फिलाडेल्फिया. तो फिलाडेल्फिया इज लव ऑफ सिटी ऑफ ब्रदरली लव. तो ब्रदरली लव, अडेल्फोस इज ब्रदर इन ग्रीक, अडेल्फोस. तो सिटी ऑफ ब्रदरली लव इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया. फिलहार्मोनिक, लवर ऑफ हार्मनी, lover of harmonia, love of music or harmony is called philharmonic. Filter is a love potion. So remember, filter is a word used for love potion. Aphrodisiac, insan. So aphrodisiac comes from the root word Aphrodite. Aphrodite is the Greek goddess of sexual desire. So anything that arouses sexual desire is an aphrodisiac. For example, chocolate is considered an aphrodisiac. तो aphrodisiac कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर सेवन करोगे, उसको आप कंज्यूम करोगे, तो you will be aroused sexually. So chocolate is an aphrodisiac. Anything that arouses sexual desire. Okay. Another word, bibliophile. Phile we know is love. Biblion is the Greek word for book. So someone who loves book is called a bibliophile, one who loves books. Anglophile comes from Anglos, which means English, and phile is love. So one who is very fond of British people, British culture, British literature, British history, such a person will be called as Anglophile. फिर sociology, how people live. Sociology comes from the root word socius, which means companion, and logos is study. तो समाज की पढ़ाई करना is called sociology. समाज शास्त्र बोलते हैं इसे हिंदी में. Antisocial, anti means against, socius is companion. So one who doesn't want to socialize with others is called an antisocial. One who dislikes people and behaves in ways which are detrimental to society. Final word is asocial. Asocial मतलब he doesn't really care. Socialize हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक. Asocial has no feeling when it comes to socializing. Withdrawn, you know, self-centered. Indifferent मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता. To the interest of others. ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए इसमें, but mostly related to file and logos. Some new words that we have, all of these words we have already covered in one form or another. Tome is cutting in of something. Epi means through. Ek means out. And N means in. So remember all of these words. This is the end of the 13th session. See you in the next one. Thank you.